Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture, we are going to discuss some numerical related with the transfer function, driving point function and how to draw the poles and so here this is the first problem I am going to talk, find the voltage transfer function. फंक्शन निकालना है तो पहला काम क्या करना है आपको वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन मतलब बोथ पोर्ट्स मस्ट बी इन्वॉल्व पोर्ट 1 and port 2. Clear? So first of all we will draw the transformed diagram. Here we will assume the initial condition is 0. If the initial condition is 0, R will be transformed to R, L will be transformed to L into S, C will be transformed to 1 upon CS. We have already studied this in Laplace transform. So this is the same diagram I am going to draw. This is called as transform diagram. This is called as V2 of S. This is the V1 of S. Clear? This is 2 ohm. R will be R. L will be LS. L कितना है 3 Henry, so 3S. Okay, and this will be 1 upon C is this. C कितना है 1 upon 6, so this will become 1 upon CS. 1 upon 1 by 6 into S. So this will become 6 by S. This is equal to what? 6 by S. So it will become like this is called as transform diagram. This will be V1 of S and this will be V2 of S. Now let us say I am assuming this loop, one loop. I have only one loop, I. Current is flowing I of S. So you can say V2 of S equal to what? V2 of S equal to what? यहाँ का impedance कितना है 6 by S into I of S. 6 by S into I of S. Clear? That is the V2 of S. Now loop 1, current I is flowing in 2, 3S and 6 by S. So current कहाँ flow रहा है loop 1 में? कहाँ 2 plus 3S plus 6 by S में क्या flow हो रहा है? I of S equal to V1 of S. Okay, so this is the V1 of S equal to this plus this into I of S. So क्या आएगा 3S square plus 2S plus 6 upon S into what? I of S. So I have taken the LCM and I got it. This is the V1 of S. Clear? So I got two equations. This is 1. This is 2. We got it. Now, what is the voltage transfer function? Voltage transfer function. Voltage transfer function क्या होता है? V2 of S upon V1 of S equal to V2 of S कितना है? 6 by S I of S upon V1 of S this 6 3S square plus 2S plus 6 upon S into I of S. So this I of S will be cancelled. S will be cancelled. So you will get the voltage transfer function is 6 upon this and I am taking 3 common. So you will get bracket में क्या आएगा S square plus 2 by 3 S plus 6 by 3 is 2. So this 6 and this will be cancelled, so you will get 2. So the transfer function I am getting 2 upon S square plus 2 by 3 is 0.666 S plus 2. So this is the value I am getting. 2 upon S square plus 0.666 S plus 2. Okay, so I am getting this value. Okay, so this is the voltage transfer function. Voltage transfer function
I'm getting it. Now I had to draw the poles and zeros also. I had to draw the poles and zeros also. So just I'm taking another sheet. Okay. Voltage ट्रांसफर फंक्शन कितना आ रहा है अपना 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 0.666 एस प्लस 2. This is equal to what? Numerator polynomial upon denominator polynomial. Okay, so no zeros. न्यूमरेटर में s है ही नहीं है तो no zeros. Okay, poles कैसे निकालेंगे? How to find the poles? If you equate denominator equated to 0, this is equated to 0. S square plus 0.666 s plus 2 equal to 0. So I'm using the calculator. Okay, if you use the calculator, you will get two zeros poles. You will get P1 and P2. You will get two poles. Why? Because s square term is there. You will get minus 0.333 plus j 1.37, and you will get another pole minus 0.333 minus j 1.37. So if you use the calculator, you will get these two poles. Please be careful about it. अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आपके पास दोनों वैल्यू इक्वल दिखेंगी. पहला दिखाएगा -0.333, दूसरा पोल भी -0.333 दिखा रहा था. डोंट से कि दोनों रियल पोल है, सिंपल पोल है, रिपीटेड. अगर -0.333 और दूसरा भी -0.333 दिखा रहा है तो यू हैव टू सी एट कॉर्नर. एक कॉर्नर पे मॉनिटर पे, कैलकुलेटर के मॉनिटर पे आई वर्ड दिखता है. इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है. सो डिफरेंट टाइप्स के पोल में कैसे निकालते कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल, यू सी देयर एंड ट्राई टू गेट इट. ऐसा नहीं कि लिख दिया -0.333 -0.333. प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. अगर दोनों सेम वैल्यू आ रहे हैं मतलब समथिंग यू हैव टू सी एट द कॉर्नर ऑन द राइट साइड अपर कॉर्नर, राइट साइड अपर कॉर्नर. वहां आई या कुछ ऐसा दिखता है सिंबल, उसका मतलब होता है कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स आर देयर. सो बी केयरफुल अबाउट इट. ओके, सो आई गॉट इट. नाउ हाउ टू ड्रा. सो ड्रा करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक okay, this is what, this is called as S plane. This is called as what? S plane. This is sigma minus, this is minus real part, this is imaginary part, right? Minus j omega, right? This is the S plane. Now you can say real part is what? Minus 0.333. So this is minus, sorry यहाँ पर, sorry it is not a correct one. ये रियल पार्ट पोल यहाँ नहीं है. पोल कहाँ है? ये -0.33 नेगेटिव. ओके, और जे कितना है? 1 पॉइंट समथिंग. ये जे 1.37 माइनस जे 1.37, और दिस इज द, ये वैल्यू थोड़ा सा इससे ये नहीं है. ओके, दिस. सो यू कैन ड्रा इट. So I have two complex conjugate pole, one pole at here and another pole here. This is a complex conjugate pole we have. Real part is, दोनों का real part negative है ना. If real part is negative, इसका मतलब है it is a stable system. And complex conjugate है तो कैसा system आ रहा है? Oscillatory. Okay, अगर आप time response if you want you can check. मैं यहाँ पूछा नहीं है, they have not asked time response. This is what? Voltage transfer function. Okay, it is like that.
It is like that. Response will be oscillatory and reducing. Okay, so be careful about it. Okay, so in this way you will get the response. So they have not asked this, but they have asked this. Draw the poles and zeros. Okay, so I'm rubbing it. Okay, I'm rubbing it also. Next problem I'm going to solve. Okay, question number 2. Find the voltage transfer function. Now see here, voltage transfer function V2 is shown here. So I have one loop only. पहला स्टेप क्या करना है आपको? Same problem I have. Only draw the transform diagram. Transform diagram same. Okay, this will be V1 of S. This will be 2. R will be R. L will be LS 3S. Or C will be 1 upon CS. So it will become 6 pi S. Or this is the voltage here they are asking V2 of S. V2 of S. Same loop. One loop is there. So I is flowing, right? I of S. So what is the value of V2 of S? V2 of S equal to क्या होगा? 3S into I. 3S into I of S. Loop 2, current I कहाँ flow रहा है? I is flowing here. 2 plus 3S plus 6 by S into I of S equal to what? V1 of S. This is V1 of S. This is equal to what? V1 of S. So V2 upon V1 कट जाएगा, I of S कट जाएगा. Okay, so you will get this equal to what? 3S square, 3 into S square plus 2 of S, 2 plus 2 into S plus 6 upon S. ये मैंने क्या किया? LCM लेने के बाद ऐसा कर लिया और I of S. Equation number 2. This is what V1 of S. So voltage transfer function V2 upon V1 of S. V2 upon V. If you take this ratio, I of S will be cancelled, right? So you will get 3S upon 3S square plus 2S plus 6. So you will get 3 will be cancelled, 3 LCM लिया, so you will get S upon S square plus 0.666 S. क्यों? 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 3 3 कैंसिल्ड, S square plus 2 by 3 हो जाएगा, that is 0.666 plus 6 by 3 means 2. So you will get this. Oh sorry, यहाँ पर S है ना एक, ये S यहाँ था ना. ओके, सो ये S यहाँ S भी है, तो ये S ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा S स्क्वायर. सो यू विल गेट दिस इज द वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन, S square upon S square plus 0.666 S plus 2. Now how to find the poles and zeros? Okay, so first I am going to find the zeros. How to find the zeros? If you equate denominator equal to 0, so S square equal to 0, so you will get two values of S equal to 0 and 0. I am getting two zeros at origin. At 0 मतलब at origin, repeated है ये. And poles कैसे मिलेगा? S square plus 0.666 S plus 2 equal to 0. So you will get two poles P1 and P2. और आपको अगर याद हो तो पिछला प्रॉब्लम ही है, रिपीटेड है, ओनली जीरोस चेंज हो गया, राइट? सो यू विल गेट two poles. कितना आ रहा था? -0.3
333 प्लस माइनस जे 1.37, यही आया था लास्ट टाइम, लास्ट प्रॉब्लम में, राइट ना? So I'm getting second minus 0.33 plus minus j 1.37. Okay, so I'm getting it. So I'm getting two zeros and two poles. How to draw it? So is it clear? Now I'm just how to draw. I'm just rubbing it, or I'm drawing here only. How to draw the poles and zeros? Just see here. I'm going to draw it, poles and zeros. So this is the S plane I'm going to draw. This is the sigma and j omega. This is called as S plane. Okay, I have two zeros. We have two zeros. S square term है ना numerator में. So we have, I'm getting two zeros at the origin. Two zeros at origin. It is a multiple zeros. It is not called as simple zeros. Okay, and I'm getting two poles, minus 0.33, minus 0.33, or is j plus j 1.37 and minus j 1.37. So I'm getting two complex conjugate poles, right? Okay, this is one pole and it is another pole. What is the value? Minus 0.33 plus j 1.37. And यहाँ पर है minus 0.33 minus j 1.37. So in this way I am getting two complex poles and two zeros, repeated zeros at origin. That is a function. That is the way of drawing the poles and zeros, right? So I'm going to take one more numerical. I'm rubbing it first. Example number 3. Okay, so find the driving point impedance. Why it is called as driving point impedance? We have to find at this port. If only one port is involved, it is called as driving point impedance, right? So just I'm first of all I'm going to draw the transformed diagram. R will be R, L will be LS, L into S, C will be 1 upon CS. Clear? This is V of S. Clear? And this current is flowing here, I of S. If you I of S मतलब you can draw you can take one loop. Current कितना flow हो रहा है I of S. So क्या आएगा V of S? If you write the KVL, R plus LS plus 1 upon CS into I of S in S domain. Clear? R plus LS plus 1 upon CS में क्या flow हो रहा है? I of S equal to what? V of S. Okay. So V of S upon I of S, यहाँ I of S आएगा तो V of S upon I of S क्या होता है? That is the only one voltage and एक ही पोर्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे? ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस Z of S. ड्राइविंग पॉइंट V upon I मीन्स ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कितना आएगा? L C S square L into C S square plus R C S plus 1. I have taken the LCM upon CS. So this is the answer I am getting. क्या आ रहा है? LC. Okay. और अगर इसके पोल्स एंड जीरोज निकालना है तो यू कैन टेक LC कॉमन लिया तो क्या आएगा? S square plus
एल सी यहां से निकाला तो क्या आएगा, आर बाई एल, बराबर ना, एल सी निकाला है तो आर बाई एल आएगा एस, प्लस यहाँ क्या आएगा, वन अपान एल सी, अपॉन व्हाट, सी ऑफ एस नहीं, सी इंटू एस है, सी इंटू एस, सी एस, तो C will be cancelled. Okay, one L is a constant. So in this way you will get this answer, right? So this is the value of S square plus R by LS plus 1 by LC upon S. Now इसका मतलब यहाँ पर I have two zeros, 2 and 1 pole. You will get it. Clear? और अगर you know the value of L, R, C की value मालूम है, so you can draw the poles and zeros. Second thing, अगर ये transformed इसका इम्पीडेंस के बदले में एडमिटेंस पूछा है y ऑफ एस क्या उल्टा हो जाएगा, ये s आ जाएगा न्यूमरेटर में और ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 बाई एल सी। तो बी केयरफुल अबाउट क्या पूछा है, उसके हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। दे हैव नॉट आस्क्ड दिस बट आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड इट। ओके, so if you know the value of RLC you can draw the poles and zeros also, but अभी तक RLC की वैल्यू नहीं मालूम है, so we can't draw poles and zeros. This is the question number 3. Okay, one more question I am going to solve, just I am rubbing it. Question number 4, find the driving point impedance. Again एक ही पोर्ट इन्वॉल्व है यहाँ पर, इसको बोलेंगे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले इसका क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म्ड डायग्राम क्या होगा, C will be 1 upon CS, R will be R, L will be LS, L will be LS, R will be R, C will be 1 upon CS. This is V of S और this is I of S. कोई जरूरत नहीं है KVL वगैरह लिखने की। क्लियर, सिंपल प्रॉब्लम। ट्रांसफॉर्म डायग्राम, ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस पूछा, मतलब Z of S पूछा है ना, तो कैसे निकालेंगे, यहां से स्टार्ट करो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले ये बताइए, ये दो, these two are what, they are in series. Clear? So you will get LS plus R, you will get this is both are in series, right? और ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल में आ जाएंगे, 1 upon CS. So these two are in series, you will get LS plus R. एक हो गया ये। अभी ये और ये कायम है पैरेलल में, तो कैसे आएगा, Z of S equal to what, directly, no need of calculation required, LS plus R into 1 by CS, Z1 into Z2 upon Z1 plus Z2, सॉरी ये वन C of S नहीं है, C into S है, सॉरी CS। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड इट। पहले स्टार्ट फ्रॉम द अदर एंड, ओके, दिस टू आर इन सीरीज, तो ये कॉम्बिनेशन और 1 by CS आर इन पैरेलल, सो दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या आएगा, L बाई, इसका क्या आएगा, इक्वल टू L बाई C, एस एस कैंसिल्ड, L बाई C प्लस ये क्या आएगा, R बाई C S। ओके, या फॉरगेट इट, लीव इट, कोई जरूरत नहीं इसको ऐसा करने की। ओके, मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, आई एम राइटिंग हियर सेम, क्या आ रहा है, एल एस प्लस आर इंटू 1 बाई सी एस अपान, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, एल सी एस स्क्वायर प्लस आर सी एस
plus 1 upon CS, and this CS and this CS will be cancelled, so you will get ls upon r upon this. तो यहाँ से मैं l बाहर ले रहा हूँ तो क्या आएगा r प्लस r by l, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है s, you will get s, l बाहर लिया तो s प्लस यहाँ क्या आएगा r by l, और यहाँ से मैं LC कॉमन ले रहा हूँ LC, तो यहाँ से क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस r by l plus 1 by LC. So this L will be cancelled. So 1 by C into this. So this is the driving point impedance I am getting. Okay. So I am getting the driving point impedance. क्या आ रहा है आपका S plus R by L upon C common है, that is a constant है, S square plus R by LS plus 1 by LC. So in this way you will solve the problem. Okay. If you know the value of RLC, you will get the poles and zero. So you can see 1 0 is there, simple 0, and I'm getting 2 poles. I don't know what are the 2 poles, maybe complex conjugate, maybe real. It depends on what the value of RL and C. But this is the answer. Okay, so I'm rubbing it. Okay. And I'm stopping here only. Okay, one more part I'm developing. So we will discuss few more problems based on that. Okay, so that is part 2. So I'm here stopping here only. Thank you very much for listening me carefully. Thank you.